on 12th August 2026, PETA India has successfully supported a raid conducted by Forest Department and Police of Rampur. We received an information about a notorious individual who was abusing birds on the terrace of his house. We have seized over 120 birds involving parakeets protected under Schedule 2 and pigeons who were being abused and used for kabootarbaazi. An FIR has been registered in Suar Police Station, Rampur under relevant sections of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1960 and the Wildlife Protection Act 1972. When we reached the location, we found the pigeons and the parakeets crammed in small cages. The cages were littered with their own filth, dust, food waste. When we examined the birds, we found various injuries which was result of feather plucking, which was ultimately result of overcrowding. These injuries has resulted in permanent psychological and physical damages to these poor birds. पेटा टीम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया, जिसमें बहुत सारे पक्षी जैसे रेड रिंग रोज तोता है, बहुत सारे कबूतर पिजन्स वगैरह पकड़ करके पीपली वन क्षेत्र में रिलीज किए। जैसा कि पेटा टीम ने किया, एक ये बहुत ही अच्छा योगदान रहा कि पब्लिक में बहुत अच्छा मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश वन विभाग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया पक्षियों को बचाने में लगा हुआ है। किसी भी वन्य जीव को कैद करना, पक्षी को कैदना दंडनीय अपराध है। धारा 26 के अंतर्गत ये एक गैर जमानती अपराध है। इसमें आपको जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकते हैं।